अस्सलाम बच्चों, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? चलिए जी। सो दिस इज सेशन स्पेसिफिकली फॉर अनसर्टेनिटी के पेपर टूस। ठीक है। सो देयर वर लॉट ऑफ क्वेरीज रिगार्डिंग अनसर्टेनिटी। वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह आई एम डूइंग ग्रेट। एंड रिगार्डिंग क्लास, हमारी एक क्लास है ऑनलाइन बैच जो है, उसमें हमने आज यही प्लान किया हुआ था कि हम लोगों को पासवर्ड्स करने थे। एंड जो कॉलेज में हमारी क्लासेस हैं उसमें से क्वेरीज आ रही थी रिगार्डिंग दी पास पेपर्स ऑफ अनसर्टेनिटी। ठीक है। ये आज का सेशन है। नेक्स्ट सेशन जो हमारा होगा वो नेक्स्ट वीकेंड होगा और वो स्पेसिफिकली होगा फॉर वेक्टर्स ओनली, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स के ऊपर कुछ क्वेश्चंस होंगे। नाउ कुछ क्वेश्चन सेलेक्ट करके रखे हुए हैं फ्रॉम सम ओल्ड एंड सम रीसेंट पास्ट पेपर्स। बहुत आसान से बहुत समझ लेके बहुत रिपीटेड वे के जो क्वेश्चंस होते हैं वो आज के लिए सेलेक्ट किए हैं। ठीक है। और वेक्टर्स की क्लास मैंने बेटा अभी बताया मैं नेक्स्ट वीक ले रहूँगा। अच्छा, तो जो क्वेश्चंस हैं उनका मकसद सिर्फ ये है कि आपको जो रूल्स हैं, जो मैथमेटिकल रूल्स हैं, जो आपको अनसर्टेनिटी कैलकुलेट करने के लिए, मेजर करने के लिए याद रखने होते हैं, वो आपको अच्छे से याद हो जाए। दूसरा, उनकी मैथमेटिकल डीलिंग किस तरह होती है, कहाँ पे कन्वर्जन ज़रूरी है, कहाँ पे कन्वर्जन ज़रूरी नहीं है, कब परसेंटेज निकालना है, कब नहीं निकालना, ये सारी चीज़ें। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन, what is the treatment of the significant figures and decimal places and how is examiner gonna ask significant figures and decimal places। ठीक है। तो हम जो स्टार्ट कर रहे हैं वो कर रहे हैं पेपर 2 से, सो दैट कि हमें अच्छा कुछ जनरल क्वेश्चंस भी मैंने इसमें ऐड कर रखे हैं, साथ ही साथ आ रहे थे जनरल एरर्स रिलेटेड, कुछ यूनिट्स रिलेटेड थे, तो एक रिकैप हो जाएगा। इस वजह से मैंने उनको भी यहाँ पर ऐड कर दिया। ठीक है। चलिए, सो वी आर स्टार्टिंग विद द फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है। अच्छा, मैं कोशिश तो करूंगा कि जितना मैंने बाइंडर बना रखा है वो सारा ही करवा दूं, लेकिन अगर सारा नहीं भी करवा सका तो आई बी शेयरिंग दिस फाइल विद यू ऑल और आप इसको कंप्लीट करेंगे। ठीक है। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम नीजून 22। दिस इज पेपर 2 and the question says के in the following list underline all units that are SI based units। अच्छा, कैलकुलेटर सबके हाथ में होना चाहिए। क्वेश्चन मैं पढ़ूंगा, वर्किंग मैं करूंगा, कैलकुलेटर में कैलकुलेशंस आप कर रहे हैं, मेरे साथ साथ सॉल्व कर रहे होंगे। ठीक है ना। और बहुत ही अच्छा होगा कि अगर आपके सामने एक नोटबुक रखी हुई है और आप इस सब चीज़ों को लिख करके कर रहे हैं। ठीक है। मैं बार बार बोलता हूँ कि सिर्फ देखना कि ओके जी सर इस तरह कर रहे हैं, वो दिमाग में नहीं बैठेगा, उड़ जाएगा तुम लोग के दिमाग से। तो एक एक स्टेप मेरे साथ साथ लिख कर करो, एक एक कैलकुलेशंस खुद अपने हाथ से करो, सो दैट तुम्हें चीज़ों को चीज़ें मेमोराइज हो। बैक टू द क्वेश्चन, वो कहता है आपसे इन द फॉलोइंग लिस्ट अंडरलाइन ऑल द यूनिट्स दैट आर एसआई बेस यूनिट्स। सिर्फ एसआई यूनिट्स नहीं बोला उसने, बोला एसआई बेस यूनिट्स चाहिए। एसआई बेस यूनिट्स हमें पता था कि वो जो हमने स्पेसिफिकली 5 फिजिकल क्वांटिटीज जिनको बेस यूनिट्स कहा था, बेस क्वांटिटीज कहा था, उनके यूनिट्स को बेस यूनिट्स कहा जाता है। तो आपके पास एम पे, क्योंकि करंट आपके पास एक बेस क्वांटिटी है, डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इज अ बेस क्वांटिटी, बस डिग्री सेल्सियस इज नॉट अ बेस यूनिट। ठीक है। केल्विन यूज करते हैं। उसके बाद वी हैव किलोग्राम्स फॉर मास, न्यूटन इज नीदर एसआई यूनिट ना, इसकी क्वांटिटी एसआई बेस क्वांटिटी है। चलो, अच्छा आगे वो आपसे क्वेश्चन ऐसा कर रहा है कि उसने कहा फिगर 1.1 shows a horizontal beam clamped at one end with a block attached to another end. The block is made to oscillate vertically. The young modulus, अच्छा इस पे एक बात करनी है अभी। The young modulus of the material of the beam is given by this question। देखो बहुत सारे बच्चे मैसेज कर रहे थे कि सर आपने तो यंग मॉडुलस अभी पढ़ाया नहीं है, नहीं पढ़ाया। देखो यंग मॉडुलस आपके पास डी फॉर्मेशन जो हमारा चौथा या पांचवा चैप्टर है उसके उसमें एक क्वांटिटी हमने पढ़ी यंग मॉडुलस। ठीक है। आपने यहाँ पे ये समझना है कि जब आप क्वांटिटीज, यूनिट्स एंड अनसर्टेनिटी सॉल्व कर रहे होंगे तो उसका जो कॉन्सेप्ट है वो तो सिलेबस के किसी भी हिस्से से पूछ सकता है आपसे। ठीक है। हाँ, अलबत्ता आपके टेस्ट के अंदर फिलहाल जो आपके असेसमेंट्स होंगे उसके अंदर ऐसा कोई सवाल नहीं आएगा जहां पे ऑलरेडी आपको वो फॉर्मूला पता होना चाहिए। ठीक है। ऐसा क्वेश्चन जरूर आ सकता है, जैसे यहाँ पे उसने बोला कि यंग मॉडुलस इज गिवन। ठीक है। सो यंग मॉडुलस इज ऑलरेडी गिवन ओवर हियर। चले जी, ओके, चले, दैट्स समथिंग न्यू। ओके, ठीक है।
सही है. We'll switch to that. Okay. So the question says that the young modulus is given by E is equals to km upon t square. A student determines the values and percentage uncertainty kmt. The table 1.1 lists the percentage uncertainty, right? K is certain value with a percentage uncertainty plus minus 2.1%. M is probably the mass of the block. The percentage uncertainty is given to be plus minus 0.6%. And T is the time period of the oscillation, and the percentage uncertainty is given to be plus minus 1.5%. The student uses the values to calculate the value of young modulus. The value of young modulus is already been calculated and quoted to you. Okay. Most of the questions in uncertainty, the value, the actual value is already been calculated. आपने MCQs में भी हम लोगों ने ऐसा देखा, and in paper 2s also. Calculate the percentage uncertainty in the value of E. We need the formula first. We'll rewrite the formula. E is equals to Km upon T square. Okay. In order to calculate the percentage uncertainty, we all know that the percentage uncertainty, Walaikum Assalam, Ayan, the percentage uncertainty would be percentage uncertainty of K plus percentage uncertainty of M plus twice of percentage uncertainty of T. Now, this is a step. If you are well aware of the rule, then you can just start from this step. Else, what's the logic behind this? In order to find out the uncertainty of something which is a result of multiplication and division and squares and under roots, we always calculate fractional uncertainties. The way of fractional uncertainty is error upon the value. Now this is some extra step just to let you guys know what was the rule behind it. Y was 2 placed over here. Anything having a power, the power multiplies as a coefficient. Since we were to find out the percentage uncertainty, we needed to multiply it by 100, all of them. So simply we can write percentage uncertainty of K, percentage uncertainty of M, and percentage uncertainty of T multiplied by 2. So this step wasn't needed. It was just for the explanation. We can start from this and we can fill in the values. Percentage uncertainty of K is 2%, M at 0.6%, and then we have T, twice of T, that's 1.5%. You all are calculating this value. मुझे आंसर बताइए. I need the answer. So it was 3, 5.1, 5.7. I calculate this value as 5.7. How come the value is 4.95? How come the value is 4.95? It's 5.7. This becomes 3, 3.6, 5.6 and 5.7. Okay. So the percentage uncertainty in the value is 5.7%. The next part, it says use your answer in B1. No issues. Now, these are the mistakes which unknowingly, undeliberately हम कर रहे होते हैं paper में, and we think that paper. Second step में, why did we use fractions? Mariam Khan,
Your answer is incorrect. $5.7. Acha. Why did we use the fractions in the second step? Okay. I just stated a rule. The rule was if something is as a result of division or multiplication, in order to find out the uncertainty, we always calculate the fractional uncertainty, which is the algebraic sum of the fractional uncertainties of the individual values, right? In order to find out the percentage uncertainty, we can multiply the entire fraction or individual fractions by 100. This is what we did in the second step. The second step wasn't needed. It was just an explanation. You can start from here, fill in the values, get the answer, right? Now, in the next part, in the last part, it says use your answer in B1 to determine the value of E when it's with its absolute uncertainty to an appropriate number of significant figures. We need the answer, we need the value of E. The value of E, which was already being calculated, we need to reuse this value, 8.245 10 raised to the power 9. Now, this is the exact part जिसके बारे में मैंने आपसे कहा, where we need to treat the significant figures. Now, it says that we need to find out the absolute uncertainty. Appropriate number of significant figures are required in this case. First of all, we'll be finding the absolute uncertainty. Absolute uncertainty would be the fractional uncertainty. Fractional uncertainty multiplied by the value of E. Now, what could be the fractional uncertainty? Fractional uncertainty is 0.057, right? So 0.057 multiplied by 8.245 into 10 raised to the power 9. Okay, so you'll be calculating the value. You all are calculating it with me. It says 0.057, 8.245 10 power 9. Now the value is it's 0.469 10 raised to the power 9. Why to write the value in this form? First of all, we need to keep the decimal places of the value and its uncertainty to be equal. The powers of 10 must be equal. If this value is given in the power of 10, the error must be given in the same power of 10. Now, taking care of the significant figures, all the errors over here, the errors are given in 2SF, 1 and 2 again. So I may write this value up to 2SF, or if not possible, then 3 only. So it's better to write the answer as 0.47. Now, regarding the value of the it was young modulus. Regarding the value of the young modulus, we need to keep the same number of decimal places. Since यहाँ पे we have 2 decimal places, we'll be using the same number of decimal places here only, and we'll write 8.25 10 raised to the power 9. So now both the values are in appropriate number of significant figures having same powers, having same decimal places.
So यहाँ पे I need a thumbs up if you get the method to calculate this. Clear to everyone? Chale, let's move towards the next question. Okay, now a question with different values, different formulas, but similar format. The question is from February, March. Okay. Acha, nahi, we are not supposed to write 10 power 9 if it's already written. It was just to highlight that the same values are to be, both the values are to be in the same power of 10. If it's written, then it's not necessary to write over here, balki it's incorrect to write over here. But if it's not, then it would be a necessary step to be taken. 0.47 पहले आना चाहिए था. No, 0.47, the correct format to write the value is E plus minus del E. So this was the value of E and this was the value of del E. Value plus minus the error. Now this is the most common mistake. Students write del E plus minus E. This is absolutely wrong. Absolutely wrong. बिल्कुल गलत. Challenge. Underline all the February March 23 paper 2 question number 1. Underline all the SI base units in the following list. SI base units, the same question. So we have ampere, we have Kelvin. One trick part is this: current is the SI based quantity, not the unit, and we were asked only about the units, so you have to take care of this thing. Part B, since we haven't covered kinematics in a lot of classes, so we are skipping this part, although I think students from Hydro and students from Beacon House can easily do this part. Okay, but still I'm skipping it. An experiment to perform. An experiment is performed to determine the acceleration of the car in B. The following measurements are obtained. Experiment is performed to determine the acceleration. The values that are obtained are displacement 3.89 plus minus 0.5%, velocity 2.75 plus minus 0.8%. The velocity is V, considering it as a final velocity. Calculate the acceleration A of the car. Now, one tip is, whatever the formula examiner is inquiring in the first part, he is most probably using the same formula in the remaining parts. Okay, this is a key to understand. So I won't be sure. So we won't be worrying about the formula. We already have the formula. S is equals to V square upon 2A. To the people who haven't done kinematics yet, we are just consider that we are just calculating the value with respect to the given formula, and it's correct. So the value is 2.75 squared twice of since we are supposed to find out the displacement, यहाँ पर we'll rearrange it. A is equals to B square upon 2S. When we place the values, S is given to be 3.89, right? Now, if
if any of these value, if any of these value were not in the SI unit, value निकालते वक्त we need to calculate it. If you're finding out the value, you need to convert. I just received a message regarding Happy Teachers Day. Nice. चलिए जी. So we need to convert if the values aren't in the SI means units. तो यहाँ पे we are calculating it. आप मेरे साथ साथ कैलकुलेट कर रहे हैं स्पीड में थोड़ा सा. 2.75 का स्क्वायर over 2 into 3.89, that gives us 0.972. Now here's a big tip. Since we in the entire paper there's one single rule, all the answers should be measured in two significant figures, should be quoted in two significant figures until and unless asked in any other. In the if you are calculating the uncertainty in the question of uncertainty, the number of significant figures depends upon the raw data of the question. So I'll be just writing 0.97 as per the rule of answering the values in 2SF, but I'll be keeping this value in mind in case I need to have any sort of variation. Okay, na? Determine the percentage uncertainty to two significant figures in A. Percentage uncertainty. Now, percentage uncertainty of anything that is being multiplied or being divided by any other things. The rule says that fractional uncertainty of the individual values or percentage uncertainty of individual values, since we are calculating the percentage uncertainty, is to be calculated. Achha, since we are calculating it, we are not given with the percentage uncertainty. Achha, let's do it the same way. So twice of, why twice? Because we had a square on it. Twice of 0.8 over 2.75 into 100 plus 0.5 3.89 into 100. This would give us directly the percentage uncertainty in the value calculated A. I'm expecting answers. बोथ आर इन परसेंटेज, दोनों परसेंटेज के अंदर है। देखिए हमने दोनों को 100 से मल्टीप्लाई किया, इसको सेपरेटली मैंने इसलिए मल्टीप्लाई किया था बिकॉज 2 सिर्फ इससे मल्टीप्लाई हो रहा था। अच्छा, ओ आई एम सो सॉरी, आई एम सो सॉरी, आई ठीक है ठीक है ठीक है, आई एम सो सॉरी, आई एम सो सॉरी, आई एम सो सॉरी, मैं मैसेज में इतना बह गया था। The values are already given in percentage. I am so sorry. I misread the question. This is 1.6 plus 0.5, 2.1%. बच्चों एक दफा दोबारा देख लेना, एक छोटा सा मिस्टेक मुझसे हुआ। आई डिड अ मिस्टेक, आई misread this. ठीक है, I misread this percentage. The values are already given in the percentage, in the percent form. We are not supposed to calculate it separately. We are being given with this entire value, which is equals to
0.8 and this entire value which is given as 0.5 already. So the calculation is simple, 2.1%. Here is the point where मेरा देसी टीचर says मैं गलत थोड़ी लिखा था, मैं तो चेक कर रहा था कि आप लोग अटेंटिव हैं या नहीं, right? And where some Western world teacher would say, oh, I'm so sorry, I did a mistake. But no, we desi teachers, we never commit mistakes. We were just checking you. Were you attentive or not? No, you weren't. Only one of the students was attentive. Telling use your answer in C1 and C2 to determine the absolute uncertainty in the calculated value of A. Now, repeating the same method, we are to find out the absolute uncertainty. Absolute uncertainty के लिए we will be needing the both the values. One was 0.972, if I'm not wrong, meters per second square, and the percentage uncertainty in A was 2.1%. सबसे पहले we'll be finding out the absolute uncertainty in A, that is 0.972 multiplied by 0.021. That would give us the absolute value of uncertainty in the A. Yes, that's correct. We desi teachers are never wrong. If we write something incorrect, it means we are checking the student. If we calculated a value which is not confirmed by the marking scheme, so it means there's a misprint in the marking scheme. We are not wrong. So we have the value in two decimal places. I'll be writing it in two decimal places, 0.97 plus minus 0.02. Matching out the decimal places, significant figures with the error, and the answer is done. यहाँ पे we had three significant figures और यहाँ पर दो जा रहे हैं. So that would be wrong. मुझे यहाँ पे इसको 0.972 ही लिखना पड़ेगा. Why? The reason is the values here are in three significant figures. My answer should be in three significant figures. The errors here are given in one significant figures. Now error have a margin of one or two significant figures. So since the value calculated is 0.02, so I'll write it as 0.020, right? Calculate कर लेते. This is 0.972 multiplied by 0.021, 0.0204. So I cannot write 204 at 20 as 201. So I'll be just ending up here. So 0.20, three significant figures for this value as per the raw data. One significant figures for this value as per the raw data. The decimal places of both the values must be the same, right? Challenge. Now let's try a different question. Go ahead. Here is one very different question. Okay, very different question. We have covered this part in MCQs, but not in paper 2s. So paper 2s के अंदर देखा है. This is something unique and rarely asked. बहुत ध्यान देंगे. The question says it's from May June 10, paper 2-3. Reference ये लिखा हुआ. A digital voltmeter with 3-digit display is used to measure the potential difference across a resistor. The manufacturer, now here comes the key point. The manufacturers of the meter state that its accuracy is 1% and 1% digit. Now, two errors in the same value. Now, the first accuracy range, when it says accuracy range, when it says it's accurate up to this value,
It means this is the fluctuation जो कि absolute uncertainty होगी. This is the absolute uncertainty, right? And 1% digit, 1% digit, and examiner may rewrite this value as systematic error, this could be a zero error. Now this value, will give you the small random errors, and this value is a systematic error already there in the voltmeter. So the final answer would have this and this included in the final value. And how? The question says, for this reading, calculate. The reading of the voltmeter is 2.05. The voltmeter reads 2.05. For this reading, calculate to the nearest digit the change of 1% in the voltmeter reading. Now the 1% of 2.04 would be 2.05 would be 2.05 multiplied by 1%, that is 0.01. The value would be 0.02. Now these are the value caused by fluctuation. These are the value that are commonly written as uncertainty, like plus minus. Like commonly we'll write as 2.05 plus minus 0.02. Generally this would be the answer, the final answer. But since we have 1% plus minus one digit एक further error है, so plus minus one digit means this digit, the last digit, the third digit, 0.01 add हो गए. So the final value, what the maximum possible value of the potential difference is, since the value is 2.04, the error is 0.02, but there is a fluctuation in 1%. 1% would be added as plus minus one digit. So that plus minus one digit, like the value lies between 2.03, say 2.07 according to the error. But according to the voltmeter, there is a digit error. So the maximum value could go like 2.08 plus minus one digit. So one digit, it will always start from the digit at the rightmost digit. So एक digit का जो error है, this might change it to 2.08. So the final answer would be 2.08. This is a tricky part. This is something which really comes, तो वो याद रखना मुश्किल होगा. मुझे बताइएगा कि this part is clear to you. Is this clear? Achha, it can be 2.06, but the question asks the maximum possible value. So we'll be going to plus 1. Minimum possible में क्या होता है? Let's say the examiner would have asked minimum possible. The minimum possible में पहले तो I would have selected this value, and then इसमें एक digit का error could have been 2.02. चलें जी, I'm explaining it exactly. ठीक है, ठीक है, ठीक है, चले.
There is a voltmeter. The manufacturer says there is the error, the accuracy range is 1%. The accuracy range 1% की है और 1 प्लस माइनस 1 डिजिट का मसला है उसके अंदर. प्लस माइनस 1 डिजिट का मसला मतलब उसके अंदर एक डिजिट कुड फ्लक्चुएट. अच्छा, डिजिट कौन सा फ्लक्चुएट करेगा? डेफिनेटली वो जो रीडिंग्स आपने डिजिटल मीटर्स में देखी होंगी, दे लाइक दिस. ठीक है, तो रीडिंग्स हमेशा यहाँ से स्टार्ट होंगी. ठीक है ना, इधर से स्टार्ट मतलब इस वाले डिजिट से स्टार्ट हो रही है. तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि अगर कोई फ्लक्चुएशन होती है तो प्लस माइनस 1 डिजिट की वो यहाँ पर आ रही होगी आपके पास. ठीक है, तो सबसे पहले उसने आपसे कहा कि जनाब इसके अंदर एरर निकालते हैं. एक्यूरेसी रेंज वाज 1%. If the recorded value is 2.01 2.05, so the 1% error in 2.05 would be 0.02. So the answer of voltage would generally be written as 2.05 plus minus 0.02, right? But since there is a one digit error, what is the maximum possible value which I can read? Generally, if the answer is 2.05, considering the uncertainty, it can lie between 2.07, that is plus 0.02, and then minus 0.02, that would make it 2.03, right? This is the general range. But what if considering that plus minus 1 digit into account कि अगर ये error आ गया, if this error occurs, तो what is the maximum possible value? तो maximum possible के लिए सबसे पहले मैं यहाँ देखूंगा, इसके अंदर fluctuation could go up to 2.08 or 2.06. So the maximum possible is 2.08. Now nothing can make this go beyond 2.08. So the maximum possible value is 2.08. Right? Now clear to everyone. I need clearance to go ahead. चले जी. In part B, the question says, sir, अगर सर मिनिमम होता तो हम अगर मिनिमम पॉसिबल पूछा तो भाई 2.03 लेते. ठीक है, ये अकॉर्डिंग टू रेंज 2.03 के बाद अब यहाँ से अगर एक डिजिट की फ्लक्चुएशन लेते तो इसकी एक डिजिट की फ्लक्चुएशन कुड हैव गॉन टू 2.04 एंड कुड हैव गॉन टू 2.02. तो फिर हम यहाँ पे लोअर बाउंड करे होते. सर ये 2.07 के अपर लोअर बाउंड्स क्यों कंसिडर कर रहे हैं? इसलिए कंसिडर कर रहे हैं, देखें यहाँ पे उसने कहा द पॉसिबिलिटी ऑफ एरर्स आर टू फोल्ड. पहला, एक तो एरर नहीं है, फ्लक्चुएशन है, अनसर्टेनिटी है जो कि 0.02 की है. अब आंसर मेरा आ रहा है 2.05 2.0. लेट्स से मैं प्लस माइनस 1 डिजिट समझाता हूँ. पहले प्लस माइनस 1 डिजिट समझो. प्लस माइनस 1 डिजिट का मसला मतलब ये है कि अब अगर आपके पास वैल्यू आ रही है 4.67, तो इंस्ट्रूमेंटल एरर ये है कि ये डिजिट 4.68 4.66 जा सकती है. मतलब एक डिजिट अहेड, एक डिजिट बिलो, राइट? ये सिस्टम का एरर ऑलरेडी है. ठीक है, अच्छा अब जो मैं आंसर रिकॉर्ड कर रहा हूं, मेरे आंसर की रेंज आ रही है 2.03 से लेके 2.0
7। नाउ इसके अंदर अगर फर्दर कोई पॉसिबल जा सकती है वैल्यू, वो इस एरर की वजह से 2.08 जाएगी। क्वेश्चन डजंट सेज कि ये वैल्यू एक्चुअली है, उसने बोला मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू कि अगर कोई एरर +-1 डिजिट का आता है व्हाइल द मेजरमेंट, तो वो कितनी जा सकती है, 2.08 जा सकती है। मिनिमम होती तो मैं यहां से आता एंड इससे एक लेसर पे जाता 2.02। नाउ क्लियर? उस्मान खान, ठीक है, चले। नाउ एक क्वेश्चन, a theoretical question of errors only, not uncertainty, errors only. Since we have done a very little practice of errors, the theoretical questions of errors. So a question. चलो, अच्छा आई रिकॉल उसका लास्ट पार्ट रह गया था, बट चले जाने दे, अब उसको देख लेंगे। Now this is a question, May June 11 paper 2-3. It says for each of the following, tick one box to indicate whether the experimental technique would reduce random error, systematic error, or neither. The first row has been completed. चलो, experimental techniques है, we are given with some experimental techniques, 4 experimental techniques, one is already done for you, and we have to judge whether this would reduce the random error or would eliminate the systematic error or would have any difference, like neither. So the first question, the first statement was keeping your eye in line with the scale and the liquid level for the single reading of a thermometer. Like keeping your eye on the line of scale perpendicular to the line of scale, that reduces or that eliminates the parallax error. Parallax error is considered as a systematic error over here. Keeping your eye, ठीक है, so that would be a systematic error, right? चले, अब बाकी हमने इस तरह जज करने। This one, averaging many readings of the time taken for the ball to roll down a slope. Okay, we all know that averaging, taking multiple readings, taking average of multiple readings won't affect the systematic error. If the system is faulty, it would remain faulty even for the multiple readings. ठीक है, so in that case ये systematic error को तो बिल्कुल भी affect नहीं करेगा. Yes, it would affect the random error. Small random errors are reduced by taking number of readings and averaging them out. Okay. Now, using a linear scale on an ammeter, that isn't something to eliminate errors. That is something to have the proper readings. That is something to have, to calibrate proper meters or scales. तो ये error में तो नहीं कर रहा. इफ द कैलिब्रेशन इज परफेक्टली डन, तो कैलिब्रेशन सही है, तो आपके पास नॉन लीनियर स्केल की भी कैलिब्रेशन आप कर लें किसी तरह. ठीक है, वी हैव कैलिब्रेशन ऑफ नॉन लीनियर स्केल्स आल्सो. एग्जांपल्स हमारे सिलेबस में, इट यूज्ड टू बी अ पार्ट ऑफ सिलेबस, लेकिन वो अब नहीं है. नॉन लीनियर स्केल्स की कैलिब्रेशन हो जाती थी, एरर्स का उससे कोई ताल्लुक नहीं है. Correcting for a non-zero reading when the micrometer screw gauge is closed, मतलब correcting for the zero error. Zero error is a systematic error. If I am correcting the multimeter, if I'm correcting any of the meter, particularly the screw gauge or the micrometer, vernier caliper, so that is basically reducing the systematic error. Checking out for the non-zero value, मतलब zero error won't affect the random error. They are still there. They will be still there. चलो, now this is the part जिसके लिए मैंने इस क्वेश्चन को सेलेक्ट किया, राइट? वो ये था कि the measurement of a particular time interval is repeated many times. The reading of a particular time interval is repeated many times. The readings are found to vary. The result are as shown. अच्छा,
particular time periods थे, they were repeated, like graph कुछ ऐसा है, थोड़ा सा different graph है. I'm going to explain the graph. The time interval 10, the number of readings, the number of occurrence were 2, मतलब it came to twice. 10.1, the number of occurrence was 6. 10.2, 8. The most number of readings were 10.3, right? Then 10.4, 10.6, 10 and so on, right? So this is the graph. Most number of occurrence is for 10.3. The question says, state how the readings on figure 1.1 show the presence of a systematic error and a random error. अच्छा, नीचे एक पार्ट था वो हमने मिस कर दिया. नीचे पार्ट था, we missed that part. It says the true value of the time interval is 10.1. True, this is the true value. This is the true value. Okay. And the most occurred value is this. The most occurred value is 10.3. अच्छा, अब गौर से समझिएगा इस बात को. The most occurred value is 10.3 and the actual value was 10.1. अगर मैं देखूं तो there is a constant error of 0.2 between the actual value and the most occurred या most recorded value, that is 10.3. So clearly there is a systematic error, as there is a fixed fluctuation, the fixed value of error size between the actual value and the true value, recorded value. अच्छा, systematic error की एक classification हमने कहा था कि the systematic error has a constant value of error. If that error is reduced, तो पूरा डेटा जो है वो आपके पास करेक्ट हो जाता है. Now let's say कि अगर मैं इसको रीड्रॉ करता हूँ, redraw in a way that I am reducing the systematic error. If the systematic error is being eliminated, तो ये जो सारा डेटा है, ये जो सारा पैटर्न है, that would shift to the new value. So what would be the new values if the error is eliminated? So the new values 0.2 का एरर है पॉजिटिव. नाउ इमेजिन कि ये डेटा से 0.2 का एरर इज रिमूव, तो मोस्ट ऑकर्ड वैल्यू ये होगी. आफ्टर दैट द वैल्यू वुड बी लाइक दिस. उसके बाद वाली वैल्यूज वुड बी देयर, and beyond this the value would be in this axis. ठीक है ना. बहुत ध्यान से देखें, the entire pattern is shifted to right by a value of plus 0.2. Systematic error में we learned that in systematic error the value of systematic error is fixed. It shifts the entire data to a positive value or a negative value. If the systematic error is reduced, the pattern doesn't change, the format, the trend of the answer doesn't change. पूरा pattern shift हो जाता है downwards या upwards अगर आपने वो प्लस माइनस का एरर वहां से हटा दिया. तो अगर मैं गौर करूं कि पूरा पैटर्न, if the value is 10.1, most occurred value is 10.3, considering 0.2 as a systematic error, if this is removed, तो पूरा pattern would be the pattern कि वो सारा मोस्ट अकर्ड वैल्यू वुड बी 10.1, द एक्यूरेट पैटर्न. तो अब यहाँ पे एक वर्ड में, एक नंबर के लिए इस बात को किस तरह एक्सप्लेन करेंगे, ये तो मैंने बहुत लंबा से एक्सप्लेन किया. हाउ वुड यू एक्सप्लेन इन अ सिंगल लाइन? State how the readings on figure 1.1 show the presence of a systematic error. आप लिखेंगे the entire data, yeah, the most occurred value has a constant error of 0.2 plus 0.2.
constant value of error, this shows the presence of systematic error. फ्लक्चुएशंस होती, फ्लक्चुएशंस एज इन के वैल्यूज आपके पास कुछ ऐसे चल रही होती, ठीक है नहीं, ये होता तो दिस वुड हैव शोन यू अ लार्ज रैंडम एरर, तो वहां पे सिस्टमैटिक एरर नहीं होता, लार्ज रैंडम एरर होता। रैंडम एरर तो आप देखें स्मॉल फ्लक्चुएशन आर स्टिल देयर, the span, the scattering goes from 10.1 till 10.6, ठीक है, जो डेटा द वैल्यूज आर अकरिंग बिटवीन 10.1 से 10.6, 10.0 से 10.6, ये स्मॉल रैंडम एरर्स को इंडिकेट कर रहा है। सॉरी, तो हाउ वुड यू राइट दिस? लिखेंगे द फ्लक्चुएशन, द वैल्यूज, द स्कैटरिंग ऑफ डेटा is from 10.0 till 10.6, showing small random errors. ठीक है, चल, so I hope this is clear. State the expected changes to figure 1.1 to experimental pressure. State the expected changes to figure 1.1 for experimental measures that are more accurate, more precise. State the expected changes in figure 1.1. What is figure 1.1? Expected changes. अच्छा, expected changes जैसे हमने बोला, the entire data, if it's more precise, more accurate, if okay, fluctuation, if we are actually calculating the fluctuation in terms of uncertainty, so yes, we'll do this. The maximum value minus the minimum value, this is the range of fluctuation. The uncertainty would be divided by 2. Okay, this is basically the uncertainty, the value of the actual value of, actual way of calculating the uncertainty. Like I have a meter that shows me value from 2.02. This is the maximum value and the minimum value is 1.98. Okay. Now I need to write the answer. So the error would be 0.02, maximum minus minimum divided by 2. Okay. And the central value, that is 2.0, would be my value. Taking is for 2.0, ऐसा एक we did a MCQ similar to this, maximum minus minimum. Yes, ये maximum minus minimum वाला format we really do in AS. पेपर 2, पेपर 5, P5 के अंदर हम लोग कर रहे होते हैं, वहां पे हम लोग देखते हैं इसको। चलिए, the question says state the expected changes to figure 1.1 for experimental measurements that are more accurate or more precise. If there are certain procedures considered which makes the answer more accurate or more precise. If more accurate, इसका मतलब ये है कि data would, the entire this pyramid data would shift towards left. जैसे मैंने कहा कि इसकी वैल्यू सबसे ज्यादा होगी आपके पास, ठीक है, so the data would shift towards left. If more precise, तो जो स्कैटरिंग है वो आपके पास थोड़ी सी नैरो हो जाएगी, जो वैल्यूज हैं वो 10 पॉइंट मतलब 0.6 तक की रेंज में स्कैटर हुई भी है, वो लेसर देन 0.6 की रेंज में आ जाएगी। तो मैं प्रिसाइजली आंसर लिखूंगा, तो आई राइट द ग्राफ पैटर्न would shift to left by 0.2, ठीक है, more precise, the values will now be precised lesser than 0.6, ठीक है, वैल्यू जो है वो 0.6 की रेंज से अंदर अंदर रहेंगी। चलिए, now
The remaining questions are quite much similar to the pattern we did right now. Acha, there is one more question I would like us to do, a last question. Acha. चलिए. So this is the question जिसमें the particular reason for selecting this formula was it specifically asks how random error could be reduced in this particular instrument. Just letting you know that don't expect such questions now onwards. This is something which now could be and is a part of paper 3. ठीक है, तो but still अगर आ जाता है तो हम यहाँ पे इसको डिस्कस करते हैं. This is question number 7, question number 1, paper 2 to November 17. ठीक है. अच्छा, we'll be doing this last question in this session और ये file I'll be sending it to you. ठीक है, to all of you. आपने you have to solve the entire file and कोई query होती है तो you have to ask. One end of a wire is connected to a fixed point. A load is attached to other end so that the wire hangs vertically. Now there is a wire hang from a rigid support and इसके नीचे एक there is a load. The wire hangs tightly. The diameter of the wire and the load are measured as the diameter is given as 0.4 plus minus 0.2 millimeter. Force, the load was given, actually the weight of that object which is hung, 25 plus minus 0.5 Newton. For the measurement of the diameter of the wire, state the name of the suitable measuring instrument. Achha, now naming the suitable instrument, measurement and instruments were part of the syllabus in paper 2s, paper 1s and paper 2s. अब the mostly ये question आपके पास पेपर 3 में होगा. Measurements are part of paper 2. ठीक है. Still हम यहाँ पे डिस्कस इसको इसलिए कर रहे हैं कि in case is similar to that अगर क्वेश्चन आता है तो हमें पता हो कि हमें इसको आंसर किस तरह करना है. तो I'm just doing this part. Concerned part इसका next है. तो diameter मालूम करना है. If we are supposed to find out the diameter, if we are supposed to measure the diameter, we know that we'll be using micrometer screw gauge. Don't expect such questions. दोबारा बोल रहा हूँ. Now, how random errors may be reduced when using this instrument? अच्छा, now ये procedure particularly paper 3 के लिए मैं solve करूँगा. How random errors are reduced when measuring the diameter. Now, one part practically our wires are usually twisted, are usually folded in rings like this. ठीक है, ऐसे rings बने हुए होते हैं and that damages the wire. ठीक है, तो ऐसे में होता क्या है, the diameter is not constant throughout the length. The diameter does not remain constant and sometimes the wire bends from a particular point. So one way of reducing the random error, let's say if I calculated, if I measured the diameter from this point and this point was bent a little or this point was bent a little, so I'm not sure which point is bent and how much it's bent. So one way of measuring without one way of reducing the random errors, that I must take readings across the length at different points. Like एक यहाँ ले लिया, ठीक है, एक यहाँ रीडिंग ले ली, एक यहाँ रीडिंग ले ली, एक यहाँ रीडिंग ले ली, क्या रीडिंग, एक ये हो गया. ये पर्टिकुलरली मैं आपको बता रहा हूँ क्वेश्चन 2 ऑफ योर पेपर 3. ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आ गया तो उसको डिस्कस कर रहे हैं. एंड वन अदर वे इज कि आप एक सिंगल पॉइंट पे डिफरेंट एंगल्स पे अपने मीटर को रख करके यू विल मेजर द रीडिंग्स डिफरेंट एंगल्स पे और उसको एवरेज आउट करेंगे. सो दीज आर द टू वेज हाउ यू वुड रिड्यूस द रैंडम एरर्स. ठीक है, चले अगेन जैसे मैंने कहा कि डोंट एक्सपेक्ट इन पेपर 2, पेपर 3 में एक्सपेक्ट कीजिएगा इसको. ठीक है, आगे बढ़ते हैं.
द कंसर्न पार्ट वो कहते हैं द स्ट्रेस। अच्छा अगेन स्ट्रेस क्या है, स्ट्रेन क्या है, व्हाट आर दीज वैल्यूज, वी आर नॉट कंसर्न अबाउट दिस, हमें फॉर्मूला गिवन होगा एग्जाम में। हाँ डेफिनेटली व्हेन वी टेक सेवरल रीडिंग्स तो एवरेज लेना तो मस्ट है ना, तो हम सारी तो लिखेंगे नहीं, विल ओनली राइट द एवरेज वैल्यू इस वजह से, ठीक है। चलिए, तो फाइनल एग्जाम में जब आप बैठेंगे तो ये फॉर्मूलाज आपको याद होंगे, बट स्टिल हम वो क्वेश्चन सेलेक्ट करें जिसमें फॉर्मूला ऑलरेडी रिटन है। वन थिंग टू टेक नोट इज if he can relate, if the examiner can relate deformation in uncertainty, the examiner can relate voltage, current and power in uncertainty, if any other topic in uncertainty, then he may relate uncertainty in those chapters. Expect you are doing a question related to electricity and suddenly the examiner says quote the answer along with its uncertainty. Yes, it might happen. Chale, the stress in the wire is calculated by using this expression. The expression is given. Stress का symbol आपको दे रखा हुआ है, आपसे examiner कहता है show that the value of this stress is 1.9 10 power 8. So that's quite simple. Values put in करनी है बस. The values are given. यहाँ पे इनको रीराइट कर रहा हूँ 0.4 10 पावर 0.02 मिलीमीटर। अच्छा एक खास वजह थी इस सवाल को सेलेक्ट करने के लिए, वो पहले भी बता चुका हूँ बट रिकॉल कर रहा हूँ। अच्छा नाउ if we are supposed to calculate the actual value, we won't be ignoring 4 and pi over here. तो एक एरर बच्चे ने मतलब एक रिपीटेड एरर था सर, वो हम क्वेश्चन मतलब अनसर्टेनिटी में तो कॉन्स्टेंट्स को इग्नोर कर देते भाई, हर दफा थोड़ी करेंगे यार, मतलब वो तो सिर्फ अनसर्टेनिटी में कर रहे हैं, अगर वैल्यू निकाल रहे हो तो निकालेंगे ना आप। चलें जी, तो द वैल्यू वुड बी कैलकुलेटर्स आप सबके हाथ पे होंगे 4 into 25 डिवाइडेड बाय पाई एज अ कांस्टेंट एंड डी 0.4। Now the value is given in millimeter. I need to convert into meters. So मैं लिखूंगा 0.4 plus minus sorry into 10 power minus, ये कन्वर्जन हो गई आपके पास इन मीटर्स, ठीक है। मेजरमेंट्स कैलकुलेशंस आप मेरे साथ कर रहे हैं। y 0.4 10 minus 3। अच्छा हमें कुछ प्रूफ करना था और हम नहीं कर पाए क्योंकि हमें स्क्वायर नहीं लगाया था, मैंने सॉरी स्क्वायर भी है। द वैल्यू इज 1.98, तो 989 है तो इट वुड बिकम 99 10 पावर 8 गूगल। डिटरमाइन दी परसेंटेज अनसर्टेनिटी। परसेंटेज अनसर्टेनिटी अब आपके पास इस तरह निकलेगी, तो यहाँ पे अब बहुत ध्यान से देखिएगा, वी आर एक्चुअली बी कैलकुलेटिंग द फ्रैक्शंस। यहाँ पे द परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन द स्ट्रेस would be fractional uncertainty in stress multiplied by 100। अच्छा रिगार्डिंग फोर्स, पहले मैं फोर्स लिख लेता हूँ। फोर्स को मैंने लिखा 0.5 over 25 multiplied by 100 plus twice of y twice because square is there। अच्छा अब बहुत ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे मैंने कहा था द वैल्यूज आर वी हैव टू कन्वर्ट द वैल्यूज, ठीक है। लेकिन in order to find out the uncertainty when we are calculating uncertainty हम इसको convert नहीं करेंगे। Why? Conversion अगर मैं करता तो I would have written 0.02 10 power minus 3 and again 0.5 10 power minus, ठीक है 0.4 by ratio they are still the same, ठीक है। तो आपके पास ये प्लस माइनस सॉरी 10 power minus 3 10 power minus 3 कैंसिल आउट हो जाता है। तो हम इन शॉर्ट इसको ये कहते हैं कि भाई हम कन्वर्ट करके टाइम भी वेस्ट नहीं कर रहे, हम इसको इग्नोर करें। तो इस वजह से व्हेनेवर वी आर कैलकुलेटिंग द अनसर्टेनिटी वी डू नॉट कन्वर्ट आवर वैल्यूज। अब इसको आपने मल्टीप्लाई बाय 100 कर देना है।
एंड अपना आंसर निकाल। तो आंसर आप लोग मेरे साथ कैलकुलेट कर रहे हैं, जल्दी से बताइएगा। मैं थोड़ा सा अपने स्टेप्स बढ़ा के कर रहा होता हूँ। तो ये देखें, दिस ओनली इज 2%, this only is 0.5%। तो ये आपके पास हो जाएगा 3%। The absolute uncertainty, the percentage uncertainty is 3%। And finally वो आपसे सिमिलर सा एक सवाल पूछता है कि कोट द वैल्यू ऑफ अनसर्टेनिटी ऑफ दिस स्ट्रेस जो आपने निकाला था, दैट वाज 1.99 टेंस और 9, it was 8 I guess, टेंस और 8, along with its uncertainty एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी। तो फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी तो है हमारे पास, फ्रैक्शनल सॉरी परसेंटेज अनसर्टेनिटी हमने निकाली है 3% की। सबसे पहले we'll calculate the absolute uncertainty in stress, that would be percentage 0.03 multiplied by the value 1.99 10 power 8, that gives us 0.03 1.99 10 power 8। अच्छा, ये वैल्यू मेरे पास आ रही है 0.0597 tens power 9। Now, since the values of errors are given in one significant figure, तो मैं इसको भी एक significant figure में लिखना चाहूँगा, ठीक है। तो I'll be writing it as 1.99 tens power 8। अच्छा देखिए, अब यहाँ पे टेंस पावर 8 नहीं लिखा हुआ, तो आई एम गोना राइट टेंस पावर 8 ऑन माई ओन, और ये हो जाएगा 0.06, ताकि 2 डेसिमल प्लेसेस भी मेंटेन रहें और आपके पास एक सिग्निफिकेंट फिगर भी आ जाए, ठीक है। सो आई गेस 3 to 4 क्वेश्चंस हम लोगों ने किए, थोड़े से हेल्दी कैलकुलेशंस वाले। नाउ व्हाट यू नीड टू नो अबाउट अनसर्टेनिटी, द की पॉइंट्स रिगार्डिंग अनसर्टेनिटी सुन लें। अनसर्टेनिटी में व्हाट यू नीड टू नो, पहला रूल्स, मैथमेटिकल रूल्स, ठीक है। दूसरा ट्रीटमेंट ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स एंड डेसिमल प्लेसेस। The most important thing is practice। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे आपको उतना ज़्यादा समझ में आने लगेगा, उतनी चीज़ें क्लियर होती जाएंगी, ठीक है। इन योर रिस्पेक्टिव ग्रुप्स आई विल बी सेंडिंग दिस फाइल। सबसे पहले डू ट्राई द क्वेश्चंस व्हिच वी ऑलरेडी डिड इन दिस क्लास एंड देन ट्राई द रिमेनिंग क्वेश्चंस, ठीक है। इसकी रेफरेंसेस गिवन है, बट try not to go through the marking scheme. If you're stuck somewhere, ask your teacher, that's me, to ask me, but please जितना ज्यादा दूर आप मार्किंग स्कीम से रह सकते हैं, आप अपने ए ग्रेड से उतना करीब आ जाएंगे, तो ट्रस्ट मी ऑन दैट। तो मिलते हैं आपकी रिस्पेक्टिव क्लासेस में। नेक्स्ट वीक विल बी हैविंग अ लॉन्गर सेशन फॉर वेक्टर्स ओनली, ठीक है।